God for all His blessings, His bounties, and endowment that He showered upon me. Today is a great chance for me that Allah Almighty gave me a chance to be with you and have all of you with me. And I would like to welcome everyone, my dear students, my fellow teachers, our respected principal, and our reverend director of the school, and especially our distinguished guests, our very respected and gorgeous mothers. And I want all of you to have clapping for our gorgeous mothers. Please clap for the mothers of all the children. Thank you. It's done with clapping. Okay. Now, today I have advisedly chosen the topic of great habits and why we make this great habit competition. Because when I was a child, my father used to tell me, we first make our habits and then our habits makes us. And I also observed that the most successful people are those with more successful habits. You also have noticed that the people who always have good habits always have good repute in their life. So in our school, why we have this competition? You have heard a lot of competition in a lot of schools, like writing competition, essay writing competition, and many of those like. But this is the most singularized competition of our school, that is the VN school. This is a school where active learners seek guidance, value, excellence to become our leaders for more just and peaceful world. This is our motto line, that the VN have leaders or the VN have leaders. So I want to draw your attention at that topic. मैं आप तमाम लोगों की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये मुनासिब समझा कि वो आज के इस तकरीब में शामिल हुए, स्पेशली इन तमाम माँ की जो कि बहुत मसरूफ तरीन है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला कि वो आए और इस तकरीब में शामिल हो। मैं आप लोगों की तवज्जो इस मौजू पर लेकर जाना चाहती हूँ कि हम क्यों ये ग्रेट हैबिट कंपटीशन का इनकार अपने स्कूल में करते हैं, क्योंकि जो हमारी अच्छी आदत होती है ना, वही हमें अच्छा इंसान बनाती हैं। बिकॉज फर्स्ट यू प्रैक्टिस गुड हैबिट्स मेक्स यू गुड पर्सन। बिकॉज जब कोई भी शख्स है वो अपनी डिग्री, अपनी ब्यूटी किसी वजह से जाना नहीं जाता, कोई भी शख्स अपनी अच्छी आदत की वजह से जाना जाता है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नबी हमने तुम्हें मुअल्लम बनाकर भेजा ताकि तुम अच्छे इखलाक की तकमील कर दो। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा जोर अच्छे इखलाक पर दिया गया है, और हम भी अपने स्कूल में ये कहते हैं कि एजुकेशन विद करैक्टर ग्रूमिंग, बिकॉज करैक्टर ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, इवन फॉर अ चाइल्ड, अ मैच्योर पर्सन, फॉर एन ओल्ड, करैक्टर इज एवरीथिंग। सो हमारा मोटो ही ये है कि हम बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ उनकी करैक्टर ग्रूमिंग करें। जब भी ये कंपटीशन होता है, हर बार हम यही बताते हैं कि हमारा मकसद ये है कि एजुकेशन कैन नॉट बी रिसीव्ड, इट इज अचीव्ड। हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं कि हमारे यहाँ से बच्चा पढ़कर जाए और उसके हाथ में उसकी अच्छी मार्कशीट हो, उसके हाथ में उसके सर्टिफिकेट हो दैट ही हैज डन दिस, शी हैज डन दिस, बट वी वांट कि वो उस एजुकेशन को अचीव करे, उसके चलने फिरने से, उसके बोलने से, उसके बड़ों के साथ गुफ्तगू से, उसके छोटों के साथ गुफ्तगू से पता चले कि वो किसी आला अरफा अदारे में पढ़ा है, उसकी करैक्टर बिल्डिंग हुई है, उसकी करैक्टर ग्रूमिंग हुई है, उसके पास सिर्फ ये वर्डली नॉलेज नहीं है, बल्कि जो मेन चीज अच्छा इखलाक, जिसका हमें कुरान पाक से भी सबक मिलता है, जिसकी तकमील के लिए हमारे प्यारे रसूल को भेजा गया है, वो इसकी तकमील पूरी हुई है। क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ सबसे तकद्दुस फरीजा अंजाम दिया जाता है, और सबसे जो तकद्दुस फरीजा है वो सिर्फ इल्म ही नहीं कि मतलब आपके पास इल्म ही इल्म हो और आपकी करैक्टर ग्रूमिंग बिल्कुल ना हो, बल्कि हो सकता है कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनके वालिदैन बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं?
کیونکہ ہمارے ایک اردو کے عظیم شاعر کہتے ہیں کہ کتابیں صرف الفاظ سکھاتی ہیں لیکن آدمی آدمی بناتے ہیں. وہ اس لیے یہاں بیچتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کی کریکٹر گرومنگ ہو, ان کی کریکٹر بلڈنگ ہو, وہ یہاں پر آ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے مینر سیکھیں. اسی لیے ہمارا اسکول یہ جو سنگلائز ہے, یہ خاص جو اس کی چیز ہے گریٹ ہیبٹ کمپٹیشن, یہ اسے سب سے اچھی شہرت رپورٹ کرتا ہے کہ یہ بہت اچھا ادارہ ہے اور یہ کریکٹر گرومنگ کرتا ہے. اور میں چیز جس کے لیے میں کہنا چاہتی ہوں, our mothers, parents میں especially mothers, کیونکہ بچے کی کردار سازی میں سب سے زیادہ ہاتھ اس کی ماں کا ہوتا ہے. کیونکہ مشہور انگلش رائٹر کہتے ہیں give me good mothers and I'll give you good nation اور good society. ایک اچھی ماں اچھا بچہ تیار کرتی ہے. جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بچے پہ پہلا امپریشن ہوتا ہے یا بچہ سب سے پہلے جس سے انفلوئنس ہوتا ہے وہ اس کی ماں ہی ہوتی ہے. اور میں پھر سے چاہتی ہوں کہ ان تمام ماؤں کے لیے آپ تالیاں بجائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بہت اچھا سکھایا. آداب کے معاملے میں مات نہ کھائے کیونکہ بچہ والدین اور اساتذہ کے درمیان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں سے اس کو چھوٹ مل جائے وہ وہاں سے بھاگتا ہے اور اس کی جو تکمیل ہوتی ہے کردار کی وہ مکمل نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے, اس کی پرسنالٹی میں کھلا رہ جاتا ہے. اس لیے وہ بچے جو اسکول سے سیکھ کے جاتے ہیں پھر وہ گھر جا کے ان چیزوں کی پریکٹس کرتے ہیں, وہی ایک پراپر اور ونر بچہ بنتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ٹیچرز کے علاوہ ان کے پیرنٹس کا ہوتا ہے, اور پیرنٹس میں بھی سب سے زیادہ ان کی مدرس کا, کیونکہ ماں ہی کردار سازی کرتی ہے. بچہ سب کچھ اپنی ماں سے ہی سیکھتا ہے. تھینک یو آل آف یو.